अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नज़ीर और आप देख रहे हैं लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के बारे में पढ़ा था। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर और द टेम्परेचर ऑफ एनी सराउंडिंग मीडियम। जिस मीडियम में साउंड प्रोपेगेट कर रहा है उस मीडियम के टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड इन्हिसार करता है। राइजिंग द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज। फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज बाय 0.6 मीटर पर सेकंड। ये इक्वेशन हमने लिखा था v इज इक्वल टू 331 प्लस 0.60 डिग्री सी। इस पर हमने तफसील के साथ बात की थी कि फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज बाय 0.6 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल वेव इक्वेशन भी पढ़ा था, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v इज इक्वल टू एफ लेमडा। Using this equation v is equal to f lambda, we can find any of the three physical quantities v, f and lambda, speed of sound, frequency of sound and wavelength of sound। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए हम इन दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स क्या है? व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स इन ड्राई एयर इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज 590 हर्ट्ज ऑन अ हॉट डे विद टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सी। सबसे पहले हम इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, इस स्टेटमेंट में गिवन डेटा लिखेंगे कि क्या चीज़ें हमें दी गई है। So first of all, given is 590 hertz is the frequency of sound waves. Frequency of sound waves is given 590 hertz. On a hot day with a temperature of 40 degrees C, the other thing which is given is temperature 40 degrees C. And required is what is the wavelength of the sound waves. Here is the wavelength calculation. So required is wavelength, which is denoted by lambda. It is to be found out. For this purpose, the equation which we will use is the general case equation v is equal to f lambda. From this equation, we can find out the wavelength of sound waves. Lambda is equal to v divided by f. This is equation number 1. इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, लेकिन इस पर क्वेश्चन अराइज होता है कि गिवन डेटा में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो दी गई है लेकिन स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू इस इक्वेशन में नहीं दी गई। तो मैंने आपको बताया था कि हम इसमें ये वाले इक्वेशन भी यूज करेंगे, v इज इक्वल टू 331 प्लस 0.60 डिग्री सी। इस इक्वेशन के जरिए हम स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 331 कांस्टेंट टर्म है, 0.6 कांस्टेंट है, t डिग्री सी की वैल्यू 40 डिग्री सी दी गई है। So first of all, for this equation we will find out the speed of sound waves. Now first of all, v is equal to 331 plus 0.60 degree C. Putting the values 331 plus 0.6 t डिग्री सी की जगह हम 40 डिग्री सी लगाएंगे। So we will get 331 plus 0.6 को 40 से मल्टीप्लाई करने से 24. So v will be equal to 355 मीटर पर सेकेंड. This is the speed of sound at 40 डिग्री C. सबसे पहले हमने स्पीड ऑफ साउंड को 40 डिग्री सी पे मालूम किया, क्योंकि सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर इस वक्त 40 डिग्री सी है, तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड 331 नहीं होगा, बल्कि इसमें स्पीड ऑफ साउंड 355 मीटर पर सेकंड होगा। अब हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ v 355 एंड फ्रीक्वेंसी 590 इन दिस इक्वेशन नंबर 1। लैम्डा इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 implies lambda is equal to v 355 divided by f 590. We will get lambda is equal to 0.6 meter. 0.6 meter, this is the wavelength of sound waves. Now assignment 11.3.
फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन। एग्जाम्पल 11.3 में वेवलेंथ कैलकुलेशन। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन फ्रॉम दी जनरल वेव इक्वेशन V is equal to f lambda। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स विद वेवलेंथ ऑफ 0.25 मीटर। यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू दी गई है इन एयर विद टेम्परेचर ऑफ 32 डिग्री C। यहाँ से हम स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड आउट करेंगे और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो द गिवन डेटा इज wavelength is given, wavelength which is denoted by lambda 0.25 मीटर और टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है T 32 डिग्री C। टू फाइंड आउट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मालूम करनी है। इसी के लिए भी हम जनरल वेव इक्वेशन यूज करेंगे V is equal to f lambda। From this equation frequency will be equal to V divided by lambda, equation number 1। उसी तरह का प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी लेमडा की वैल्यू तो दी गई है लेकिन स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले हम स्पीड ऑफ साउंड को मालूम करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन V is equal to 331 plus 0.60 डिग्री C। V will be equal to 331 plus 0.6 into 32 degree C। V will be equal to 331 plus 0.6 into 32, it will give 19.2। So the value will be equal to 350.2 meter per second। This is the speed of sound at 32 degrees C। Now putting these values, the value of the speed of sound and the value of the wavelength of sound in equation number 1, frequency will be equal to, equation number 1 implies frequency will be equal to V is 350 approximately divided by 0.25। Now frequency will be equal to 1400 hertz। This is the frequency of sound। यहाँ पर आप देखें इस डिवीजन को हम किस तरह परफॉर्म करेंगे, 350 डिवाइड बाई 0.25। तो यहाँ से पॉइंट हटाने से डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा और वो हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे 25 और ये एक दूसरे से डिवाइड होते हैं एग्जैक्टली। सो 14 मल्टीप्लाई बाई 100 विल इक्वल टू 1400 हर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। इस पर एक और एक्सटेंशन एक्सरसाइज भी दिए गए हैं, एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है फॉर प्रैक्टिस, वो भी हम सॉल्व करेंगे। नाउ देयर इज अनदर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एक्सटेंशन एक्सरसाइज 11.3। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ 590 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी साउंड इन फ्रेश वाटर। यहाँ पर एयर नहीं है, फ्रेश वाटर at 25 degree C where the speed of sound is 1493 मीटर पर सेकंड। वही तरह इसी तरह का प्रॉब्लम है जो हमने सॉल्व किए। यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो है फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी वो है 590 हर्ट्ज और दूसरी वैल्यू वो टेम्परेचर की दी गई है और वो है 25 डिग्री C। रिक्वायर्ड इज वेवलेंथ, wavelength which is denoted by lambda। इक्वेशन जो हम यूज करेंगे वो जनरल वेव इक्वेशन V is equal to f lambda। फ्रॉम दिस इक्वेशन lambda is equal to V divided by f। यहाँ पर सिर्फ इस प्रॉब्लम में और उन दोनों प्रॉब्लम में फ़र्क इतना है कि वहाँ पर हम उस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड पहले मालूम करते थे और फिर उसकी वैल्यू दर्ज करते, लेकिन यहाँ पर हमें साफ अल्फाज में दिए गए हैं वेयर द स्पीड ऑफ साउंड इज 1493 मीटर पर सेकंड। अगर आप टेबल में भी देखें जो स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया दिए गए हैं वहाँ पर भी एट 25 डिग्री C द स्पीड ऑफ साउंड इन फ्रेश वाटर इज 1493। तो यहाँ पर हमें मालूम करना नहीं, बस वैल्यू दी गई है कि द स्पीड ऑफ साउंड इन फ्रेश वाटर एट 25 डिग्री C इज 1493 मीटर पर सेकंड। सिर्फ यहाँ पर हमें इनकी वैल्यूज दर्ज करने हैं। स्पीड ऑफ साउंड की जगह 1493 और फ्रीक्वेंसी की जगह 590। सो द वेवलेंथ of the sound waves in fresh water at 25 degree C will be equal to 2.5 meter approximately। इन दोनों को तकसीम करने से जो वैल्यू आती है वो है 2.5 मीटर। the wavelength of sound waves in fresh water at 25 degree C is 2.5 meter।